Hello, all the students. Welcome once again. My name is Anil Chaudhary, and today we are going to have a class on grammar. And the chapter which we are going to discuss today, the name of the chapter is tenses. Now, this chapter is very important, very interesting, and unless we have a profound command on this chapter, we will not be able to frame the sentences properly. We will not be able to articulate our thoughts properly. मैं कई सारे स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ एंड व्हेन आई सी जिस तरह से वो सेंटेंसेस बनाते हैं उसी से पता चल जाता है हाउ मच डीप अंडरस्टैंडिंग दीज स्टूडेंट्स हैव अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे जनरली कमिट सम ब्लंडर्स while making the sentences. Try to understand tenses. It's a very, very important chapter. Even if you don't have much interest in grammar, at least ensure that at least 3-4 chapters of grammar are very important और कम से कम उन chapters पर तो हम बहुत अच्छी कमांड बना ही लें. And उन chapters में से there is one important chapter which is tenses and the others can be subject and verb agreement, preposition, etc. And when I talk about the various entrance exams, the various competitive exams, wherever the weightage of grammar is there, you can take it for granted, the weightage of tenses will always be there. So a majority of the questions will be directly or indirectly based on tenses. तो इस चैप्टर को स्टूडेंट्स अपन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वर रिक्वेस्टिंग कि सर टेंसेस पर एक वीडियो आ जाए, तो हियर इज द वीडियो. एंड इन टुडेज क्लास वैसे तो ये चैप्टर बहुत वास्ट होता है. हम अपने कोर्स में जब डिस्कस करते हैं तो आई टेक एटलीस्ट 5-6 आवर्स ऑफ क्लासेस 5-6 hours of classes to develop a very good understanding of this chapter. We ought to understand a lot of things. We need to understand the various structures of the sentences. We need to understand किस context में कौन सा tense हमको use करना है. We need to understand the most common errors, and after that we need to practice a lot of questions. तब जाकर हम confident होते हैं किसी भी chapter को लेकर. And when I talk about tenses, yes, detail से अगर मैं करूँ तो बहुत discussion possible है. But anyway, in this video, I'll not be discussing much about the theory part. I'll not be discussing much about the structures of the sentences, but I'll be focusing more on solving questions. And while solving questions, I will actually tell you what are the common errors. And I'm very confident whatever questions I'll be discussing today, similar types of questions or the questions which are based on similar logics and rules, you people are going to face in your upcoming exam. तो बस तैयार हो जाओ, टेंसेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एंड स्टूडेंट्स अभी तक टेंसेस अच्छा लगा या नहीं लगा, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट द मोमेंट यू कंप्लीट दिस वीडियो यू विल एक्चुअली फॉल इन लव विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड टेंसेस. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, वी पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दीज आर द 3 टाइम्स. हमें कभी भी कोई सेंटेंस बनाना हो, या तो वो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा. बट अगेन स्टूडेंट्स, अगर इनमें से फर्दर क्लासिफिकेशन अपन करें तो देयर आर 4 कैटेगरीज पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी टाइम. तो वी पीपल नो दिस. हमने स्कूल में डिस्कस किया भी होगा, पढ़ा भी होगा. अब क्या तो सबको पता होगा व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट पॉज करके एक बार यू कैन हैव अ लुक ऑन ऑल दीज 12 सेंटेंसेस. अब सोचो स्टूडेंट्स, टेंसेस पर एक अच्छी कमांड अगर बनानी है, जस्ट लिसन टू मी फॉर 2-3 minutes एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस. अगर टेंसेस पर बहुत अच्छी कमांड बनानी है, व्हाट इज नीडेड इज वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड किस कॉन्टेक्स्ट में हमें कौन सा टेंस यूज करना है. वेयर सिंपल पास्ट विल कम, वेयर सिंपल प्रेजेंट विल कम. सो अनलेस आई अंडरस्टैंड दिस, स्टूडेंट्स, टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हमेशा इनकम्प्लीट होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक ए सेंटेंस, आई ड्रिंक कॉफी. So when I say I drink coffee, am I drinking coffee right now? No. When I say I drink coffee, I mean to say that मैं coffee पीता हूँ, but that does not mean कि मैं अभी पी रहा हूँ. So this sentence, I drink coffee, is a sentence of simple present tense, and it actually shows a regular action जो मैं करता रहता हूँ. When I say students it rains, मतलब बारिश होती है, but that does not mean that बारिश अभी हो रही है. So you people understand, ये जो simple present tense है, this is not the real present tense. But now students, if I make a sentence like, I am teaching tenses right now. Sorry. So if I say, I am teaching tenses right now, now this becomes a sentence of present continuous tense. And present continuous tense क्या show करता है? That something is going on right now.
if I say it is raining right now, if I say you people are studying right now, all these are examples of present continuous tense. So in this manner, we people will have to understand. अब जैसे for example present perfect, okay, you people can see this complete column. So he drives a car, I drive a car, okay, मैं चलाता हूँ, he is driving a car, he has driven a car. So when I say he has driven a car, that becomes present perfect, which actually shows that some task or some work has actually got over. तो कोई काम जो अभी अभी पूरा हो चुका है, और इवन इफ अगर वो पास्ट में भी पूरा हुआ है, it has some relation with the present. Do understand all the students? Perfect tense, sorry, perfect tense हम कहीं पर भी अगर यूज करते हैं, that means we are actually focusing on the completion of the work. So whenever the focus is on the completion of the work, we ought to use the perfect tense. फिर चाहे वो present perfect हो, past perfect हो, या फिर future perfect. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखो, ये सारे टेंसेस, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो यू पीपल विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द वेरियस स्ट्रक्चर्स. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, सिर्फ ये मानकर मत चलो कि दीज आर द 12 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल. ओके, हर टाइप के टेंस में देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ फ्रेमिंग दी सेंटेंसेस एंड देयर कैन बी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. चलो एक मैं डिस्कस करता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ मेनी थिंग्स वी पीपल शुड नो एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, दिस पर्टिकुलर टेंस इज कंसर्न. अब देखो, so when I say he drives a car, this becomes present simple tense. He drives a car. Structure समझना, this becomes the subject, he becomes the subject, drives, it is V1 and this becomes the object. Okay, तो बड़ा simple सा sentence है. He drives a car, I drive a car, I drink coffee, I play cricket, etc. But now this becomes a sentence of active voice. अब इसी को स्टूडेंट्स में पैसिव में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो यू शुड नो इसको पैसिव में कैसे बदलते हैं. तो व्हेन आई से अ कार इज ड्रिवन बाय हिम, सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस, इजंट इट? नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई एम अनिल, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, इवन दिस सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. बट यहाँ पर स्टूडेंट जो मैं वर्ब यूज कर रहा हूँ, that is a state of being verb. Here students, I am not using an action verb. So do understand, अगर मैं कहता हूँ I am Anil, even this becomes an example of present simple tense. तो क्या समझना है? We people have to understand verbs दो तरह के होते हैं, action and state of being. तो कई बार स्टूडेंट जो state of being verb होता है, जो केवल ये दिखाता है, okay, what is the state? जैसे for example, when I say I am Anil, I am not doing any action here. Okay, it is just showing the state that I am Anil. So even this can be a sentence of simple present tense. So you do understand active voice, passive voice, और कई बार स्टूडेंट जो sentences होते हैं वो इंटरोगेटिव फॉर्म में होते हैं. Now, in case अगर इसी सेंटेंस को मुझे इंटरोगेटिव में पूछना है तो कैसे पूछूंगा? चलो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं. Does he drive a car? Now this becomes interrogative. So you people see, एक ही टेंस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, एनीथिंग इज पॉसिबल. सो दैट इज द रीजन यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द वेरियस स्ट्रक्चर्स फर्स्ट. और साथ में स्टूडेंट्स फिर हमको पता ये भी होना चाहिए कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा टेंस आता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, so this becomes simple past. So when I say Newton discovered gravity, so this becomes simple past. Okay, in this manner. So anyway, students, ये discussion अपने आप में बहुत vast है. And as I told, I'll not be focusing much on this. Okay. So what I'll be doing now, I will be starting the questions. I presume that you people do understand these structures and you people are able to identify that whether a given sentence belongs to which particular tense. Students, एक और छोटा सा point, मैं questions पर आऊँ उसके पहले. सबसे पहले, whenever you come across a sentence, try to identify which tense is there in the sentence. सबसे पहले तो टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखो. मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, अगर हम टेंस आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं, व्हाट इज द यूज देन? एरर को आइडेंटिफाई करना तो बहुत बात की बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेंस. ओके, तो यू पीपल कैन सी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट, हैज इज कमिंग, पास्ट परफेक्ट, हैड इज कमिंग. और किसी भी फ्यूचर टेंस में हमेशा आप देखोगे विल या शल, ये आना कंपल्सरी होता है. तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखो, जैसे कंटिन्यूअस टेंस, ओके, आईएनजी फॉर्म हमेशा आएगा,
in continuous. So you people can compare these sentences properly. Okay. So pause करके you people can go through, and now let us take the questions. सबसे पहले, I had been married in 1990. Now, whenever you come across a sentence, first of all, identify the tense, and then you people have to be careful about some very important words which are actually given in the sentence. Students, सबसे पहले तो हमने कौन सा tense यहाँ पर use किया? So when I say I had been married, okay, this becomes past perfect tense. Yes, this becomes past perfect. Had is coming, I had been married. Okay. अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेज है दैट इज इन 1990 बिकॉज इट शोज द पास्ट टाइम. तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं पास्ट टाइम एडवर्ब. नाउ यू पीपल बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर वी कम अक्रॉस अ सेंटेंस वेयर अ पास्ट टाइम एडवर्ब इज गिवन टू अस. तो वो जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होना चाहिए. आई रिपीट, व्हेनेवर वी कम अक्रॉस अ सेंटेंस वेयर अ पास्ट टाइम एडवर्ब इज देयर, दैट सेंटेंस वी शुड ऑलवेज मेक इन past simple tense. So you people understand, here I am taking a past time adverb, but tense मैंने कौन सा use किया? Past perfect. That is the reason this sentence is not correct. Now how to rectify this? We people have to make the sentence in past simple tense. The students, either I can say I married in 1990, the sentence is okay, or I can say I was married in 1990. Even students, this sentence is okay. तो इन दोनों में से आप कुछ भी ले लें चलेगा, लेकिन I had been married, this is not correct. Why? Because we are using a past time adverb here. Okay. Well, I'll take one more example to make you understand this. If I make a sentence like I have eaten an apple yesterday. Now you people tell me, what is the mistake here? Is the sentence correct or wrong? So if I say I have eaten an apple yesterday, is this sentence correct or wrong? Again, students try to understand. हमने कौन सा tense use किया? I have eaten. So this becomes present perfect tense. Okay. Now here, students, yesterday is coming. So what is yesterday? Again, it becomes a past time adverb. तो ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर मैं कहता हूँ in 1990, yesterday, 2 days back, okay, 5 years back. So all these are examples of past time adverbs. And whenever in a sentence we are using a past time adverb, that sentence will be in past simple tense. So here, this sentence, I have eaten an apple yesterday, is not correct. The correct answer will be, I ate an apple yesterday. So when I say I ate an apple yesterday, this becomes past simple tense. Okay? और past simple tense में हमेशा क्या आता है? V2. And ate, that becomes the second form of the verb. So eat, ate, and eaten. I hope the point is clear. So question number 1, students, the correct answer is I married in 1990 or I was married in 1990. Okay. Coming on question number 2. She finished her work when I met her. Now you people try to understand. She finished. This becomes past simple tense. Okay, simple past tense. When I met her, even this becomes simple past tense. Okay. चलिए अब इस पूरे सेंटेंस को आप देखो, मैंने 2 जगह वर्ब यूज किया और दोनों जगह स्टूडेंट्स मैंने पास्ट सिंपल टेंस को यूज किया. She finished her work when I met her. अब इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ता हूँ तो I'll come to know that जब मैं उससे मिला उसके पहले मेरा काम फिनिश हो चुका था. Isn't it? Okay, that is the meaning of this sentence. When I met her, उसके पहले मेरा काम पूरा हो चुका था. अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, इन पास्ट टेंस, इफ यू कम अक्रॉस अ सेंटेंस वेयर 2 events are taking place in the past, I repeat, if you come across a sentence where 2 events are taking place in the past, use past perfect tense with the first event and past simple tense with the second one. I repeat, ये जो रूल है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम केसेस में you will see ये रूल अप्लाई होता ही होता है. I repeat, try to understand, इसे चाहें तो नोट भी कर लें. If 2 events are taking place in the past in one sentence, use past perfect with the first event and simple past with the second event. अब सोचो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट इवेंट कौन सा है? She finished her work, so that becomes the first event. And
व्हेन आई मेट हर, तो उसके बाद स्टूडेंट्स मीटिंग का काम होता है. तो सबसे पहले she finished her work. So this becomes the first event and we are supposed to use past perfect tense here. So the correct answer is she had finished her work when I met her. So this becomes the correct answer. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलर टाइप सो दैट यू विल कम टू नो कि आखिर में कहना क्या चाहता हूं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. The prices had fallen as the new supplies had arrived. Okay. Chale, now you people try to understand. The prices had fallen as the new supplies had arrived. First of all, there are two events which are taking place in the past. One, prices का गिरना, and second, new supplies का आना. Now tell me students इस sentence को पढ़ के हमें क्या लगता है सबसे पहले क्या हो रहा है, prices का गिरना या new supplies का आना? Try to understand. The prices had fallen as the new supplies arrived. As the new supplies had arrived. तो सबसे पहले new supplies are coming and because of that the prices are falling. आप सोचो ना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. न्यू सप्लाईज आएगी तभी तो प्राइस गिरेंगे, और वैसे भी स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एज यूज कर रहा हूँ. तो द प्राइसेस हैड फॉलन एज द न्यू सप्लाईज हैड अराइव्ड. आई मीन टू से दैट सबसे पहले क्या हो रहा है, न्यू सप्लाईज आर कमिंग और उसकी वजह से द प्राइसेस आर फॉलिंग, इजंट इट? तो नाउ स्टूडेंट्स अप्लाई द सेम रूल. If two events take place in the past, use past perfect with the first one and past simple with the second one. So here students, the first event is new supplies are coming. So that becomes the first event. So first event के साथ past perfect tense होना चाहिए. So had arrived, yes it is past perfect tense. So इसमें students there is no mistake at all. Had arrived is actually correct. But now the second event is the prices are falling. The second event के साथ हमें क्या लेना है, हमें past simple tense. But हमने कौन सा tense लिया? The prices had fallen. So this also becomes past perfect, which is not correct. The students had fallen is wrong. अब मुझे क्या करना है? I will have to take past simple. So now the question is, sir, which word is going to come here? The prices, what? So now we people have to understand past simple tense का कोई भी sentence अगर मैं बनाता हूँ तो I will have to take V2. अब students fall becomes V1, fall का V2 बनता है fell. So actually the correct answer is the prices fell as the new supplies had arrived. So this becomes the correct sentence. I hope the point is clear. समझ में आया? तो अभी तक मैंने दो important rules discuss किए. One, अगर कहीं पर past time adverb आ जाए तो we should always use past simple tense. Second, if two events take place in the past, use past perfect with the first one and past simple with the second one. So this is the point. Okay, coming on students, question number 3. They had gone to Calcutta last night. Again students see had gone. This becomes past perfect tense, but here last night it becomes past time adverb. And whenever we use past time adverb, so we ought to use past the simple tense. So therefore, instead of saying they had gone, we should say they went to Calcutta last night. So this becomes the correct answer. Who had invented the gramophone? The gramophone. Now once again I am using past perfect tense here. I will have to first understand whether using past perfect tense here is correct or wrong. So first of all, we need to understand what is the difference between simple past and past perfect. For example, if we just want to show that something happened in the past, use simple past tense. For example, if I say I studied in Karnataka, so when I say I studied in Karnataka, मैंने पढ़ाई की थी, so that becomes an example of simple past. But for example, if I want to show that something got over, something got completed in the past before a particular time, तो past में किसी particular time के पहले कोई काम पूरा हो चुका था. So if I want to focus on the completion of the work before a particular time in the past, in such a scenario, we should use past perfect tense. Students do understand past perfect tense हमेशा past of the past को दिखाता है. For example, if I say I had completed my studies before 2005. Now understand 2005 that itself is a past time. और अगर मैं कहता हूं कि मेरी स्टडीज तो उसके पहले ही पूरी हो चुकी थी,
I'm focusing on completion of the work. So if I say I had completed my studies before 2005, this becomes an example of past perfect and this is absolutely correct. So I repeat, कोई काम पास्ट में हुआ था, सिंपल पास्ट. कोई काम पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले पूरा हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट ऑलवेज शोज पास्ट ऑफ द पास्ट. ओके, डू अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इन्वेंशन, अभी जस्ट मैंने एक सेंटेंस बनाया था, न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी. न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी. आई डिड नॉट से न्यूटन हैड डिस्कवर्ड ग्रेविटी. मुझे सिर्फ इतना सा बताना है कि दिस इज समथिंग विच हैपेंड. ओके, ऐसा कुछ हुआ था. अंडरस्टैंड. So here also, instead of saying who had invented the gramophone, the best answer is who invented gramophone. Okay, the simple past is needed. There is no point using past perfect tense because मैं past में किसी और time से इसे compare नहीं कर रहा हूँ. Understand? The fair had been over 10 days ago. Again, 10 days ago, this becomes past time adverb. So we are supposed to use past simple tense here. So instead of saying the fair had been over, the correct answer is the fair was over 10 days ago. So when I say had been over, that becomes past perfect tense. तो इसके बजाय better है the fair was over 10 days ago. So this becomes an example of past simple tense. Okay? चलिए, तो ये 5 sentences अपने आप में बहुत important है. Now let us take some questions where 4 options are given to us. So how many cups of tea dash yesterday? I think now giving the answer to this question is not so tough, isn't it? So what is the correct answer? अच्छा, अब यहाँ पर सबसे important keyword कौन सा है? That is yesterday. Okay? The most important keyword is yesterday. ये जो keywords होते हैं students, ये सबसे important है. तो yesterday shows past time. So which tense is needed? Past simple tense. Okay? And past simple tense में students, did you drink? This becomes the right answer. So how many cups of tea did you drink yesterday? अब जब मैं कहता हूँ ना students, keywords are important. Let me take one more example to make you understand. For example, if I say, I did not reply yet. So when I say I did not reply yet, which tense am I using here? And is the sentence correct or wrong? Yes, what is the mistake here? सबसे पहले कौन सा tense मैं use कर रहा हूँ? When I say I did not, did ये अपने आप में V2 है. So this becomes past simple tense. Okay? चलिए, अब मुझे बताओ students, क्या ये sentence सही है या गलत? I did not reply yet. So when I say keywords पर हमेशा focus करो. Yes. तो यहाँ पर सबसे important word कौन सा है? Yet. And what is the meaning of yet? Till now. अभी तक. So when I say yet, that itself means it has a relation with the present. I'm actually discussing with the context of the present. और जब स्टूडेंट्स मैं प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ तो वहाँ पर सिंपल पास्ट यूज करना इज नॉट करेक्ट. वहाँ पर स्टूडेंट्स हमें हमेशा यूज करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यू पीपल डू अंडरस्टैंड सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है. एंड जस्ट बाई आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड वी कैन डिसाइड which tense is needed there. Here I'm using yet, which means abhi tak. So when I say abhi tak, okay, it has a relation with the present. Hence, instead of using past simple tense, we should use present perfect tense. And students, इसका present perfect tense क्या होगा? I did not reply yet की जगह I have not replied yet. Okay, so this becomes the correct answer. I have not replied yet. He has not replied yet. तो यहाँ पर helping verb have भी हो सकता है, has भी हो सकता है. That depends on the subject. Okay. So students, I have not replied yet. This becomes the correct answer. Coming on, question number 2. No, Rama is not at home. He dash for shopping. Yes, what is the right answer? सबसे पहले tense को आइडेंटिफाई करो. रामा इज नॉट एट होम. प्रेजेंट, हम प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. एंड जस्ट मतलब अभी अभी वो गया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे इज योर होमवर्क डन? यस सर, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड. तो व्हेन यू से आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, ओके, व्हाट इज दिस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो कोई काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो हियर विच इज द बेस्ट आंसर?
we need to have present perfect tense. Okay, and the correct answer here is had gone to past perfect हो जाएगा. Okay, was is not correct, will future हो जाएगा. The correct answer is he has just gone for shopping. Okay, the second option becomes the correct answer. Coming on question number 3, Shakespeare dash dramas that are appealing to the people of all ages. Now this question is again a bit confusing. Possibly बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट ऑप्शन. ओके, आई गेस यस और नो, बट अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना. इफ आई से शेक्सपियर डैश ड्रामास, अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ, सिर्फ इतना सा सेंटेंस होता, शेक्सपियर डैश ड्रामास, द करेक्ट आंसर वुड बी शेक्सपियर रोट ड्रामास, सिंपल पास्ट. बट हियर स्टूडेंट्स, रोट इज नॉट करेक्ट. वाई? बिकॉज आगे लिखा है that are appealing to the people of all ages. So when I say that are appealing, that means even if the dramas were written way back in the past, I'm discussing in the context of the present. I'm discussing in the context of the present that are appealing. लिखे भले वो past में हो, but अभी भी students they are appealing. What I mean to say is we are actually discussing in the context of the present. So here, instead of using simple past, we should prefer present perfect tense. Okay, so सारे students, the correct answer will be Shakespeare has written dramas. Shakespeare has written dramas that are appealing to the people of all ages. This becomes the correct answer because I'm using are here. एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ to make you understand why I'm doing so. मान लेते हैं स्टूडेंट्स मैंने टीवी ऑन की और जैसे मैंने टीवी ऑन किया तो देयर वाज अ मूवी कमिंग ऑन द टीवी एंड पॉसिबली चलो उस मूवी का नाम ले लेते हैं हाथी मेरे साथी. एक बहुत पुरानी सी मूवी है एंड व्हेन आई वाज वेरी यंग, व्हेन आई वर 10 years old, तब मैंने उस मूवी को देखा था. अब आप जस्ट इमेजिन करो, अभी वो मूवी टीवी में आ रही है, मैंने देखा 30 साल पहले, और जैसे मैंने उस मूवी को देखा मेरे मुंह से क्या निकला? अरे आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी. कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट. व्हाई? इवन इफ आई सॉ दैट मूवी 30 years बैक, बट स्टिल as it is coming on TV right now. So therefore, students, I am making the sentence. I am discussing in the context of the present. So therefore, instead of saying I saw this movie, better क्या होगा? I have seen this movie. I guess the point is clear. So Shakespeare ने लिखा past में है, but we are discussing in the context of the present. So therefore, simple past की जगह we should prefer present perfect tense. Okay? Do understand? Question number 4. By the end of this September, she dash in this organization for 13 years. Again, try to understand what and which time we are talking about. सबसे पहले किसी भी sentence में you people will have to identify the time. So by the end of this September, that means it becomes a future point. This becomes a future point of time, isn't it? By the end of this September. अब try to understand. इस सितंबर के एंड तक, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर डेट, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक समथिंग ओके विल बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, समथिंग विल बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. तो कौन सा टेंस आएगा? हियर स्टूडेंट्स द बेस्ट टेंस विल बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो अब स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा ऑप्शन है. The correct answer will be by the end of this September, she will have been working in this organization for 13 years. Okay, she will have been working. मतलब by the end of September उसे इस organization में लगातार काम करते हुए 13 साल पूरे हो जाएंगे. That is the meaning of this point. So therefore, third option becomes the correct answer. हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर will be working हो, but try to understand. If I take will be working, this becomes future continuous tense. You people will have to understand the difference between future continuous and future perfect continuous. चलो मैं बता ही देता हूँ. Future continuous. जैसे for example, if I ask a question, what will you be doing at 6 p.m. today? Sir, at 6 p.m. today, I will be writing a letter or I will be playing. So at the particular time in the future, what you will be doing, अगर ये दिखाना हो
the student's future continuous tense is correct. So future continuous tense, it actually shows that what is going on or what will be going on at the particular time in future. Whereas future perfect continuous, it actually shows some action, okay, will be continuously going on till a particular time in future. I guess the point is clear. जैसे I will be writing a book in 2030. I will be writing a book in 2030. Okay, future continuous. I will have been teaching for 25 years till 2030. मतलब 2030 तक पढ़ाते हुए मुझे 25 years हो चुके होंगे. तो यहाँ पर मुझे कौन सा टेंस यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. एनीवे स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला था, एक्चुअली इन टेंसेस को आइडेंटिफाई करना, इनके कॉन्टेक्स्ट को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Anash, okay, we are focusing only on the questions, but it is my honest advice to all the students. Invest some time in understanding the tenses and do understand किस context में हमें कौन सा tense use करना है. एक बार इसको समझ जाओगे, इन questions को समझना will become easy for us. चलिए, coming on question number 5. Usually when the local festival is a week away, the number of customers in the shop dash. Try to understand usually. When I say usually, that means it's a regular thing which keeps happening. So when it's a regular thing which keeps happening, तो कौन सा tense हमें use करना है? Simple present tense. But what is the job of simple present tense? To talk about a regular action जो होता रहता है. Understand? जैसे मैंने कहा था ना, I drink coffee. Okay, I play cricket. I'm not playing right now, but I play cricket. That means it's a usual action. It's a usual habit. Okay, understand? So usually when the local festival is a week away, the number of customers in the shop, which is the best answer? I'm supposed to use present simple tense here. And here students, the subject is the number. And the number should always be taken as singular. And when the subject is singular, and we need to use present simple tense, तो यहाँ पर student जो सबसे अच्छा option है, that is increases. Try to understand, as the subject is singular, यहाँ पे verb के बाद s लेना is important. Just like the sun rises in the east. We don't say the sun rises in the east. We say the sun rises in the east. The number increases. That becomes the correct answer. Okay? So be careful here. थोड़ा सा tense भी पता होना चाहिए. At the same time, थोड़ा बहुत knowledge subject and verb agreement का भी होना ही चाहिए. चलिए, coming on students, question number 6. We are supposed to find out the error here. Which part of the sentence contains the error? After Sheetal will return from Delhi, I will go to meet her. Yes, what is the mistake? Now you people try to understand. जहाँ मैं after use करता हूँ, it actually becomes a time clause. It actually becomes a time clause. Okay? Now here I'm talking about future time. Okay? अब समझना ध्यान से. Whenever I use time clause showing future time by using words like after, okay, as soon as, etc. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, we should never make this time clause in simple future tense. तो सर यहाँ पर कौन सा tense use होना चाहिए? यहाँ पर tense use होगा simple present tense. So do understand, after Sheetal will return is not correct. After Sheetal returns from Delhi. So this becomes the correct answer. I repeat, whenever students we use a time clause, okay, and here the time clause is showing future time. And we are using the words like after, as soon as. ऐसे केस में ये जो time clause होता है, कभी भी students future tense में नहीं होगा. It will always be in simple present tense. Okay? For example, if I will see her, I'll convey your message. Now, even in this sentence, it becomes a conditional clause. Even in case of a conditional clause, okay, do understand, this becomes the condition and this becomes the consequence. So when I say, if I will see her, even this sentence is not correct. I should say, if I see her, I will convey your message. So that becomes the correct answer.
तो बी केयरफुल, ये जो टाइम क्लॉज होता है, कंडीशनल क्लॉज होता है, इन्हें जनरली हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं बनाते। वी आर सपोज टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट हर, आई विल मीट हर, ओके, आई विल मीट हर एज सुन एज she arrives. Now, do understand this sentence is absolutely correct. Okay, because what is the time clause here? As soon as she arrives. और कौन सा टेंस मैं यूज कर रहा हूँ? Yes, simple present tense. बिल्कुल सही. अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ as soon as she will arrive, this is wrong. Okay, so this sentence is absolutely correct. I hope the point is clear. Done. Wonderful. चलो, coming on question number 7. Air pollution caused by industrial effluents has been studied for years, but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. Okay, I think sentence पढ़ते हुए थोड़ा सा odd लग रहा होगा, but anyway, you people have to find out the proper reason. Okay, and what is the error? Okay, along with the reason you need to find out. Amisha students, whenever you come across a sentence, no doubt we are discussing the chapter called tenses, but in general also, whenever we come across a sentence, you have to first understand what is the subject, what is the verb, and whether there is a proper agreement between subject and verb or not. In a majority of the cases, the questions are actually based on subject and verb agreement. हालांकि स्टूडेंट्स में टेंसेस में मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेंसेस. This is a question based on subject and verb agreement. Now, I have given the hint. You people can pause it and understand what is the correct answer. Air pollution. Pollution becomes the subject caused by the industrial effluents has. तो pollution singular है, तो यहाँ पर students has use करना बिल्कुल सही. Has been studied for years, but only recently has the harmful effects. Effects यहाँ पर plural है, और इसका जो verb है, this is has. तो स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वी आर सपोज टू यूज हैव. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक लाइज इन द सेकेंड पार्ट. इंस्टेड ऑफ हैज वी शुड यूज हैव. तो हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकम नोन. और वैसे भी स्टूडेंट्स अगर मैं हैव बिकम कहता हूँ, इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब बिकम यूज करना तो बिल्कुल ठीक है. बिकम, बिकेम, बिकम. तो V3 परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 आता है. Okay, come, came, come. Become, became, become. So have become. So become is absolutely correct. As में गलती है because the subject is effects, जो कि plural है. So instead of has, have will come. Okay? चलो, be careful now. Question number 8. What is the correct answer? When you will find out the solution to this problem, you will be awarded a prize. Again, students, it becomes a conditional clause. Okay? And अभी just मैंने कहा था conditional clause will never be in the future tense. Okay, so we are supposed to use simple present. So when you find out the solution to this problem, you will be awarded a prize. So this becomes the correct answer. So 1 is not correct. Okay, so by this the session gets over. So whatever things we have discussed, and believe me students, ऐसे मैं 20 वीडियो भी पोस्ट कर दूँ ना, तो भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता. इतनी चीज़ें हैं और इतनी सारी बातें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. ओके, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि एटलीस्ट जो बच्चे बहुत इल प्रिपेयर्ड हैं इस वीडियो को भी देखेंगे. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जो भी 4-5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, वो पॉइंट्स अगर आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ लो, ओके, इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, एंड देन देखिए इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके बी केयरफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द अपकमिंग एग्जाम्स. ओके, ऑल द बेस्ट अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, डू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज whenever you come across a sentence, identify the tense first. Then you see क्या उस कॉन्टेक्स्ट में वो टेंस यूज करना सही है या नहीं. ओके, ये आइडेंटिफाई करोगे तो अपने आप स्टूडेंट्स आंसर मिल जाएगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.